So this is reading passage 1. It is the fourth reading from book number 17. Bats to the rescue. Bats means कौन? चमगादड़. चमगादड़ जो बचाने आए, right? How Madagascar's bats are helping to save the rainforest. Rainforest यानी जो घना natural जो जंगल होता है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, उसको बचाने में इनका क्या रोल है, right? Let's start by reading the first paragraph, and to read it, Manali, can you read the first paragraph? Yes, sir. There are few places in the world where relations between agriculture and conservation has strained. Madagascar's forests are being converted to agricultural land at a rate of 1% every year. Much of this destruction is fueled by the cultivation of the country's main staple crop, rice. And the key reason for this destruction is that insect pests are destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers, leading them to clear forests to create new paddy fields. The result is devastating habitat and biodiversity loss on the island, but not all species are suffering. In fact, some of the island's insectivorous bats are currently thriving, and this has important implications for farmers and conservationists alike. So there are few places in the world where relations between agriculture and conservation are most strained. यानी एक तो जमीन है जिसकी जमीन के ऊपर जो रेन फॉरेस्ट है उसको हमें बचाना है, और वैसे ही हमें खुद की खेतीबाड़ी भी करनी है. जैसे खेतीबाड़ी होती है तो उससे हम नेचुरल जमीन को निकाल देते हैं, पाम ट्री ऑयल, राइट? सो मेडागास्कर्स फॉरेस्ट जो है, दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड. खेतीबाड़ी के लिए हम जमीन को साफ कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1% पर ईयर. इससे क्या हो रहा है? मच ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, ये जो बर्बादी हो रही है, इज फ्यूल्ड बाय द कल्टीवेशन ऑफ कंट्रीज मेन स्टेपल क्रॉप. राइस की खेती के लिए वो लोग जंगलों को काट रहे हैं. एंड अ की रीजन फॉर दिस डिस्ट्रक्शन इज दैट जो इंसेक्ट्स है, जो पेस्ट है, कीड़े मकोड़े, आर डिस्ट्रॉइंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ व्हाट इज ग्रोन बाय लोकल सबसिस्टेंस फार्मर्स. खेत के लिए, खेत में सब उनका जो फसल है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लीडिंग देम टू क्लियर फॉरेस्ट टू क्रिएट न्यू पैडी फील्ड्स. तो नई जमीन बनानी पड़ रही है क्योंकि जो ऑलरेडी पुरानी जमीन है वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है. द रिजल्ट इज डेवास्टेटिंग हैबिटेट, यानी पूरा का पूरा जो नेचुरल हैबिटेट है, एनवायरनमेंट है, वो पूरा बर्बाद हो रहा है. एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑन द आइलैंड, और आइलैंड के ऊपर जो अलग अलग जो प्राणियों की, इंसेक्ट्स की जो प्रजाति है वो कम हो रही है. बट नॉट ऑल स्पीसीज आर सफरिंग, लेकिन हर कोई सफर नहीं कर रहा है. इनफैक्ट some of the islands insectivorous bats, insectivorous यानी जो कीड़ों मकोड़ों पे जीने वाले जो चमगादड़ है, are currently thriving, यानी इनकी तादाद बढ़ रही है. This has important implications for farmers and conservationists alike, और इसका बहुत फायदा हो रहा है. Enter, और यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जूलॉजिस्ट रिकार्डो रोचा. And to read it, Prachi, go ahead and read the next para. Yes, sir. Enter University of Cambridge zoologist Ricardo Rocha. He is passionate about conservation and bats. More specifically, he is interested in how bats are responding to human activity and deforestation in particular. Rocha's new study shows that several species of bats are giving Madagascar's rice farmers a vital pest control service by pesting on plagues of insects, and this, he believes, can ease the financial pressure on farmers to turn forests into fields. और यहाँ पे रिकार्डो रोचा क्या कर रहा है? ही इज पैशनेट अबाउट कंजर्वेशन. वो जमीन को बचाना चाहता है और साथ में उसको चमगादड़ों से भी प्यार. ही इज इंटरेस्टेड इन बैट. वो क्या स्टडी कर रहा है कि बैट्स ह्यूमन एक्टिविटी को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली डिफॉरेस्टेशन. उसकी स्टडी ने ये बताया कि अभी के जमाने में कई सारे ऐसे बैट्स है जो राइस खेती करने वाले जो किसान है, उनको जो कीड़े मकोड़े जो अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर ये चमगादड़ अटैक करके उनको खा रहे हैं. सर्विंग बाय फीस्टिंग ऑन प्लेग्स ऑफ इंसेक्ट, यानी पेस्ट कंट्रोल, यानी जो हमें पेस्टिसाइड मारने की जरूरत पड़े उसकी जगह चमगादड़ ही आके वो सब खा रहे हैं.
and this he believes can ease the financial pressure. जो पैसा लग रहा है वो बच रहा है फार्मर्स का, to turn forest into fields. जो खेत के लिए वो लोग जंगल काट रहे हैं, उसका प्रेशर भी कम हो रहा है. So bats comprise roughly 1/5 of all mammal species of Madagascar. Madagascar में जितने भी mammals है, उसमें से 1/5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ है. And 36 recorded bat species are native to the island. यानी 36 varieties ऐसी है जो island के native है, making it one of the most important regions for conservation of this animal group anywhere in the world. यानी दुनिया में इस प्राणी को बचाने के लिए सबसे जो important जगह है वो है Madagascar. Apeksha, read the next two paragraphs from here. Co-leading an international term of scientists, Rocha found that several species of indigenous bats are taking advantage of habitat modification to hunt insects swarming above the country's rice field. They include the Malagasy mouse-earned bat, major long-fingered bat, the Malagasy white-bellied free-tailed bat, and Peter's winkle-lipped bat. These winner species are providing a valuable free service to Madagascar as biological pest suppressors, says Rocha. We found that 6 species of bat are preying on rice pests, including the paddy swarming caterpillar and grass webworm. The damage which these insects cause puts the island farmers under huge financial pressure, and that encourages deforestation. Co-leading an international team of scientists, यानी ये पूरी एक टीम है, रोचा ने एक टीम बनाई है. उसने देखा that several species of indigenous bats, indigenous यानी जो local वहाँ के जो bats है, कौन से थे जो हमने ऊपर देखा, 36 variety. तो उसमें से कई सारी varieties है, they are taking advantage of habitat modification. जो पूरा बदलाव आ रहा है पर्यावरण, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उससे जो बदलाव आ रहा है उसका फायदा ले रहे हैं to hunt insects swarming above the country's rice field. तो राइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी फसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स है, उसको खाने के लिए लोग आ रहे हैं. और इनकी ये वैरायटी है Malagasy माउस ईयर्ड बैट यानी चूहे जैसे कान वाला, लॉन्ग फिंगर्ड बैट, Malagasy white bellied free tailed bat, and wrinkle lipped bat. These are the types of bats. These winners species are providing a valuable free service to Madagascar. ये लोग एक free service दे रहे हैं farmers को as biological pest suppressors, pest controls is Rocha. We found that 6 species of bat की 6 अलग-अलग species है, are preying on rice pests, including the paddy swarming caterpillar and grass webworm. Webworm करके कीड़ा है, paddy swarming caterpillar है, ये सब किसान की फसल को बिगाड़ते हैं, उसको खा रहे. The damage which these insects cause puts the island's farmers under huge financial pressure, and that encourages deforestation. यानी इसके ऊपर से ये लोग जो नुकसान करते हैं उससे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और वो लोग ज्यादा जंगलों को काटते हैं, तो ये बैट्स उनको जंगलों को काटने से बचाते हैं. The study now published in journal agriculture, एक मैगजीन है agriculture ecosystem and environment, उसके ऊपर ये पब्लिश हो गई है, set out to investigate the feeding activity of insectivorous bats in the farmland bordering the Ranomafana National Park in the southeast of the country. तो इनकी स्टडी में क्या हुआ है, they are investigating the feeding activity कि ये कहाँ-कहाँ खा रहे हैं in the farmland, ये नेशनल पार्क के अंदर, वो भी ये लोग स्टडी कर रहे हैं. Trusty, next paras. Yes, sir. Rocha and his team used state-of-the-art ultrasonic recorders to record over 1,000 bat feeding buzzes. Echolocation sequences used by bats to target their prey at 54 sites in order to identify the favorite feeding spots of the bats. They next used DNA barcoding techniques to analyze droppings collected from bats at the different sites.
Rocha and his team used state of the art. State of the art का meaning होता है latest. It's an idiom. Latest technology use किए, किस चीज में? अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डर्स यूज किए, यानी वो लोग आवाज सुन पाए, to record over 1,000 bat feeding buzzes. यानी जब बैट खाते हैं, बैट्स जब चमगादड़ जब खाते हैं, उनके खाने की बजेस को उन्होंने रिकॉर्ड किया. echolocation sequence is used by bats to target their prey. वो शिकार करने के लिए कौन सा echolocation यानी वो सोनार और रेडार यूज करते हैं at 54 sites in order to identify the favorite feeding spots of the bats. उनके खाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है. They next use DNA barcoding technique to analyze droppings. उनका जो droppings होता है, यानी what do you call it, जो पॉटी होता है, उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया और उससे डीएनए से फाइंड आउट किया, कलेक्टेड फ्रॉम बैट्स एट द डिफरेंट साइट, कि कौन सी जगह खाते हैं, यानी डीएनए कोडिंग करते हैं. उनका जो बैट ड्रॉपिंग होता है, बैट का जो टॉयलेट होता है, उससे भी उन्होंने फाइंड आउट किया. चैताली, रीड द नेक्स्ट. The recordings revealed that bat activity over rice fields was much higher than it was in continuous forest, 7 times higher over rice fields which were on a flat ground, and 16 times higher over fields on the sides of hills, leaving no doubt that the animals are preferentially foraging in these man-made ecosystems. The researchers suggest that the bats favor these fields because lack of the water and nutrient runoff make these crops more susceptible to insect pest infestations. DNA analysis showed that all 6 species of bat had fed on economically important insect pests, while the finding indicating that rice farming benefits most from the bats. The scientists also found indication that the bats were consuming pests of other crops, including the black twig borer, the sugarcane cicada, the macadamia, the knot borer, and the shober tabby. तो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग्स यूज की, अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डर्स यूज किए और डीएनए बारकोडिंग टेक्निक यूज की, तो रिकॉर्डिंग से ये पता चला दैट बैट एक्टिविटी ओवर राइस फील्ड वाज मच हायर देन इट वाज इन कंटीन्यूअस फॉरेस्ट. यानी बड़े जंगलों में उनका जो खाना पीना था, उससे ज्यादा खाना पीना यहाँ खेतों में था. 7 times higher over rice fields which were on flat grounds and 16 times higher over fields or on the sides of the hills. यानी एग्रीकल्चरल लैंड पे उनको खाना ज्यादा मिल रहा था, leaving no doubt that the animals are preferentially foraging in these man-made ecosystem. Foraging का मीनिंग होता है वो खाना ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये man-made ecosystem में खाना ज्यादा मिल रहा है. The researchers suggest that bats favor this field. उनको ये field ज्यादा पसंद है because lack of water and nutrient runoff make these crops more susceptible to insect pest infestation. यानी जंगलों में जो पेड़ है उनको खुद का प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल पेड़ है उनको पानी की कमी होती है या फिर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर पेस्ट का अटैक ज्यादा होता है. जहां पर कीड़े मकोड़े ज्यादा, तो उनके लिए चमगादड़ों का खाना भी ज्यादा. डीएनए एनालिसिस showed that all 6 species of bats की जो 6 वैरायटी थी, it fed on economically important insect pests. ऐसे पेस्ट के ऊपर उन्होंने खाया पिया था जो हमारा फायदा कर रहे थे. While the findings indicated that rice farming benefits most from the bats. सबसे ज्यादा फायदा तो राइस फील्ड का ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ the scientists also found indications that the bats were consuming pests from other crops. दूसरे क्रॉप्स के ऊपर जो खाने वाले कीड़े मकोड़े थे उनको भी वो खा रहे थे, including the black twig borer which infests coffee plants. यानी कॉफी प्लांट्स वाले जो कीड़े मकोड़े थे उनको खा रहे थे. The sugarcane cicada, the macadamia nut borer and the sobi tabby, the pest of citrus fruits. यानी ये सारे अलग-अलग वैरायटी पेस्ट को वो लोग खा रहे थे. Ria, read the next 2 paras. Okay, sir. Local people may have further reason. Okay. The effectiveness of pets as pest controllers has already been proven in the USA and Catalonia, said co-author James Camp from the University of Lisbon. But our study is the first to show this happening in Madagascar, where the
where the stakes for both farmers and conservationists are so high. Local people may have a further reason to be grateful to their bats. While the animal is often associated with spreading disease, Rocha and his team found evidence that Malagasy bats feed not just on crop pests but also on mosquitoes, carriers of malaria, Rift Valley fever virus, and elephantiasis, and as well as black fleas, which spread river blindness. The effectiveness of bats as pest controls और इनका जो असर हो रहा है has already been proven in USA and Catalonia. दो जगहों पे उनका काम तो already हमने देखा है चमगादड़ों का. It is said by author Camp, who's at the University of Lisbon. But our study is the first to show. लेकिन हमारी जो study है वो बताती है this is happening in Madagascar और यही चीज Madagascar में हो रही है. The stakes for both farmers and conservationists are so high. उनकी सारी चीजें दाव पे लगी. Local people may have a further reason to be grateful to the bats. और वहां के लोगों को एक और कारण भी है जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा खुश है और bats के आभारी है. While the animal is often associated with spreading disease, हमें पता है कि चमगादड़ disease भी फैलाते हैं. Obviously we know, the whole world knows कि चमगादड़ से disease फैलती है. Rocha and his team found evidence, उनको एक proof मिला that the Malagasy bats feed not just on crop pests but also on mosquitoes. वो मच्छर भी खाते हैं. एक और benefit, carriers of malaria, यानी मलेरिया कम हो जाता है. Rift Valley fever virus and elephantiasis as well as black flies, वो लोग black flies भी खाते हैं and which spread river blindness. यानी ये जो कीड़े मकोड़े के सिवाय ये दूसरी चीजों को भी ये लोग खा जाते हैं. Josh, can you read the final two? Rocha and his colleagues believe that maximizing bat populations can help to boost crop yields. Here. This is Rocha points out that the relationship is complicated. When food is scarce, bats become a crucial source of protein for local people. Even the children will hunt them. And as well as roosting in trees, the bats sometimes roost in buildings, but are not welcome there because they make them unclean. At the same time, however, they are associated with sacred caves and the ancestors, so they can be viewed as beings between worlds, which makes them very significant in the culture of the people. And one potential problem is that while these bats are benefiting from farming, at the same time, deforestation is reducing the places where they can roost, which could have long-term effects on their numbers. Rocha says, with the right help, we hope that farmers can promote this mutually beneficial relationship by installing bat houses. Rocha points out कि वो भी ये कहता है that relationship is complicated, यानी इंसान की और चमगादड़ की relationship अजीब है. When food is scarce, जब खाना नहीं मिलता है, bats become a crucial source of protein for local people. यानी अगर कुछ खाना नहीं मिलता है तो लोग bats को खा सकते हैं, उसको प्रोटीन मिलता है. Even the children will hunt them. बच्चे भी उसका शिकार करते हैं. As well as roosting in trees, वो लोग पेड़ों में तो रहते ही है. The bats sometimes roost in buildings. वो घरों में भी अपना बना देते हैं, but are not welcome there because they make them unclean. लेकिन वो गंदगी बहुत फैलाते हैं, तो इससे लोगों को घरों में नहीं चाहिए. At the same time, however, they are associated with sacred caves. वो पुराने गुफाओं में भी रहते हैं, and the ancestors. So they can be viewed as beings between worlds. और ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग यानी पुराने जमाने के जो उनके पूर्वज है उनके बीच की कड़ी है, दोनों वर्ल्ड की कड़ी है, which make them very significant in the culture of the people. यानी लोग उनको पूजते भी है. And one potential problem is that while these bats are benefiting from farming, और एक दूसरा फायदा प्रॉब्लम ये है, बड़ा फायदा, कि एक जगह पे ये लोगों का फायदा हो रहा है, बैट्स का फायदा हो रहा है. At the same time, deforestation is reducing the places where they can roost. लेकिन डिफॉरेस्ट की वजह से उनका घर जा रहा है, नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है जहाँ पे वो रहते थे वो कम हो रहा है, which could have long term effects on their numbers.
तो आगे जाके उनके पॉपुलेशन पे असर होगा. सो रोचा सेज विद द राइट हेल्प, अच्छी सही तरह से मदद करेंगे, we hope that farmers can promote this mutually beneficial relationship by installing bat houses. तो चमगादड़ों के लिए घर हमें बनाने पड़ेंगे. रोचा and his colleagues believe, वो लोग ये मानते हैं that maximizing bat population can help to boost crop yields. चमगादड़ों की पॉपुलेशन बढ़ाने से खेती बढ़ेगी एंड प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. लोगों का घर भी चलेगा, घर बार भी चलेगा. The team is now calling for further research to quantify this contribution. और रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैलकुलेट कर सके कि कितनी मात्रा में मदद मिल रही है. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मींस आई एम वेरी पॉजिटिव, सेज रोचा. इफ वी गिव नेचर अ हैंड, अगर हम कुदरत की मदद करें, वी कैन स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. सो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. Many Madagascan forests are being destroyed by attacks from insects. बहुत सारे Madagascan forest है जो insect के attack से destroy हो रहे हैं. True, false, या not given. Insects किस चीज को अटैक कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल लैंड को अटैक कर रहे हैं, फॉरेस्ट को अटैक नहीं कर रहे हैं. आंसर इज false. કેમ આટલું વિચારવું પડ્યું બધાએ? So what is happening? Look at Madagascar's forests are being turned into agricultural land, और agricultural land जो है उसके ऊपर ये अटैक हो रहा है insects का. Loss of habitat has badly affected insectivorous bats in Madagascar. उनका जो लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है, यानी पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे बैट्स को नुकसान पहुंच रहा है. ट्रू फॉल्स? फॉल्स. जंगल काटे जा रहे हैं तो उसकी वजह से कीड़े खेतीबाड़ी हो रही है और उनको खाना ज्यादा मिलता है. सो आंसर इज फॉल्स. Ricardo Rocha has carried out studies of bats in different parts of the world. उन्होंने दूसरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बैट्स के ऊपर रिसर्च की है. नॉट गिवन. उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की है या नहीं हमें नहीं पता है. हैबिटेट मॉडिफिकेशन हैज रिजल्टेड, यानी हैबिटेट को हम जब चेंज करते हैं, हैज रिजल्टेड इन इंडिजिनस बैट्स इन मैडागास्कर बिकमिंग यूजफुल टू फार्मर. यानी जो हैबिटेट जो है, उनका रहने की जो जगह है, उसको चेंज करने से वो इंडिजिनस बैट्स जो है वो फार्मर्स के काम आ रहे हैं. काम आ रहा है. ट्रू. The Malagasy mouse-eared bat is more common than other indigenous bat species in Madagascar. ये चूहे वाले कान वाला जो बैट है वो दूसरे बैट से ज्यादा कॉमन मिलता है. सबके नाम दिए लेकिन कौन सा ज्यादा कॉमन कम कॉमन ये नहीं दिया है. आंसर इज Not given. Bats may feed on paddy swarming caterpillars and grass worms. वो लोग ग्रास वॉर्म पे और पैडी इन दोनों पे भी खाते हैं. सिर्फ राइस वाले नहीं लेकिन दूसरे पे भी खाते हैं. ट्रू. चलो, now finally answer in one word from the passage. The study carried out by Rocha's team, उनका एम था to investigate the feeding habits of bats in farmland near the Ronoma Fana National Park. Method क्या था? दो टेक्निक यूज की थी. अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग ऑफ टू आइडेंटिफाई फीडिंग स्पॉट्स, फेवरेट फीडिंग स्पॉट्स, एंड डीएनए ऑफ बैट डैश. चमगादड़ की टट्टी. What was the word for that? Dropping. Yes. Right? Okay, findings. उसमें उनको क्या मिला फाइंडिंग्स में? The bats के बारे में दो चीज मिली और local bats. They were most active on rice fields located on hills. Rice field में सबसे ज्यादा थे. उन्होंने क्या क्या खाया था? 8 pests of rice. राइस के कीटाणु खाए, राइस के कीड़े मकोड़े खाए, डैश के कीड़े मकोड़े खाए, शुगर केन के खाए, नट्स के खाए और फ्रूट्स के खाए. Here. Coffee. Yes, very good. Like here. उन्होंने क्या खाया? They were consuming pests of other crops, including coffee plants, sugar cane, nut plants, and citrus fruit. મેળા બધાને રાઈસ ના જોડે જોડે આ બધા પ્લાન્ટ્સ પર જે કીડા મકોડા હોય એને પણ ખાતા હતા. So answer is
Pest of rice, pest of coffee. Prevent the disease spread of disease by eating dash and black flies. Black flies और दूसरी चीज को खा के वो disease अटकाते हैं. Malaria. Mosquitoes. So mosquitoes. Local attitude to bats are mixed. लोगों का attitude mixed है. They provide food rich in dash. कैसा food provide करते हैं? Rich in protein. The building where they roost become dash. वो कैसी बन जाती है? जो बिल्डिंगों में वो करते हैं वो गंदगी फैला के जाते हैं. Is it unclean or something else? Where is it? Because they make them unclean. Yeah, उनको वो unclean गंदा बनाते हैं. So answer here is the buildings जहाँ पे वो लोग अपना घर बनाते हैं उसको गंदा कर देते हैं, unclean. They play an important role in local dash. Local dash में वो बहुत important है. क्यों है? क्योंकि वो मानते हैं कि पूर्वजों के साथ बात करते हैं. तो यहाँ पे ये भी लिखा है. And the same time, however, they are associated with sacred caves and the ancestors. So they can be viewed as beings between worlds. दुनियाओं में संदेशा पहुंचाता है, which makes them very significant in the culture of the people. वहाँ के कल्चरों में भी बहुत important है. They play an important role in local what? Culture. Culture. All right, and last question. Recommendation: farmers should provide special dash to support the bat population. Farmers को क्या बना के देना चाहिए उनको कि वो लोग रह पाए? Houses, special houses, bat houses बना के देने चाहिए. यहाँ पे लास्ट में लिखा है by installing bat houses. Are we clear with all of them? समझ पड़ी बताने आप? Yes, sir. Okay. All right. So reading passage 2. Does education fuel economic growth? यानी क्या शिक्षा से देश की आर्थिक प्रगति होती है? We have different paragraphs which are headed A, B, C, D, E, F till F we have, right? And you have to find out which section contains the following information. कौन से section में ये information है? उसके बाद we have fill in the blanks, and then we have again MCQ and master questions. Right? Let's do the second passage of reading as well. So let's read the first paragraph and understand. Beenal, can you read first paragraph? Yes, sir. Over the last decade, a huge database about the lives of Southwest German villagers between 1600 and 1900 has been compiled by a team led by Professor Sheila Ogilvy at Cambridge University's Faculty of Economics. It includes court records, guild ledgers, parish registers, village censuses, tax lists, and the most recent edition, 9,000 handwritten inventories listing over 1 million personal possessions belonging to ordinary women and men across 3 centuries. Ogilvy, who discovered the inventories in the archives of 2 German communities 30 years ago, believes they may hold the answer to conundrum that has long puzzled economists: the lack of evidence for a causal link between education and a country's economic growth. Over the last decade, पिछले 10 सालों में, a huge database about the lives of Southwest German villagers, जर्मनी के जो villagers है उनके database between 1600 and 1900, ये 300 सालों के बीच का जो period है उसके बारे में data has been compiled by a team led by Professor Sheila Ogilvy at Cambridge University's Faculty of Economics. बहुत सारा data इकट्ठा हुआ. It includes court records, court के record, guild ledgers, guild यानी क्या? वहाँ पे वो जो सब चीजें बनाते थे, सुथार काम वगैरह, उसके ledgers, parish registers यानी चर्च में जो फादरी थे उनके जो registers है, village concession यानी
Yes, it's village censuses. Village censuses यानी village की population, text list and most recent edition 9,000 handwritten inventories. लोगों की लिखी हुई diaries listing over 1 million personal possessions belonging to ordinary women and men across 3 centuries. ये सारे record इनको मिले हैं. Ogilvy, who discovered the inventories in the archives of 2 German communities 30 years ago, उसको 30 साल पहले ये चीज मिली थी, दो उसको inventories मिली थी, believes they may hold the answer to a conundrum that has long puzzled economists. ये जो चीजें जो मिली है वो हमें एक बहुत बड़े रहस्य का आंसर देगी. The lack of evidence for a causal link between education and the country's economic growth. यानी हमारे पास अभी तक ये प्रूफ नहीं है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है. यानी एविडेंस क्या है, एजुकेशन और कंट्री की जो ग्रोथ हुई इन दोनों के बीच में क्या लिंक है. शायद हमें ये रिकॉर्ड से ये मिल जाए. Now from this guild का यहाँ पे मीनिंग है, देखो गिल्ड का मीनिंग दिया है an association of artisans, कारीगर हो पता कारीगर, और merchants which oversees the practice of the trade, craft or trade in a particular area, that is the guild. उनका जो काम होता है. तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है अभी उसमें से कुछ क्या हमें मिला है. Which section contains the following information? इसमें से कौन से सेक्शन में हमें हमारे काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी. 14, 15, 16, 17 and 18. An explanation of the need for research to focus on individuals with a fairly consistent income. एक ऐसा explanation जो बताता है the need for research, कि research करने की जरूरत है to focus on individuals with fairly consistent income, के जिनकी consistent income थी. Examples of the sources the database has been compiled for. Database जो बना है वो किस चीजों के लिए बना है उसके examples. An account of one's individual refusal to obey an order. एक ऐसे किस्से की बात हो रही है जिसमें एक आदमी ने orders नहीं माने. A reference to a region being particularly suited to research into the link between education and economic growth. एक ऐसा एरिया है जिसको पढ़ने से हमें ये दोनों की लिंक मिलेगी. Examples of the items included in the list of personal possessions. लोगों की जो लिस्ट थी जिसमें उनके पर्सनल पोजेशंस थे उसमें कौन सी आइटम्स थी उसके एग्जांपल्स. So what is the answer? Jeet, I have sent you the link. Join on WhatsApp. Yes. अभी हमने कौन सा पैरा पढ़ा? फर्स्ट वन जो हमने अभी पढ़ा. 15. Yes, correct. Examples of the sources the database has been compiled from. किस चीजों से ये डेटाबेस बना है ये हमें पता चला ना. हमें कहाँ से बना है, हमें पता चला कि यहाँ से पैरिश रजिस्टर्स, विलेज कंसेंसस, टैक्स लिस्ट, गिल्ड लीजर्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजों को लेके ये चीज बनी है. और उनको 9,000 हैंड रिटन इन्वेंट्रीज भी मिली है, लेकिन इन्वेंट्रीज में क्या लिखा है वो नहीं पता है अभी तक. तो वो जो आंसर है वो नेक्स्ट में आएगा. चलो लेट्स रीड द बी. Roshni, can you read B paragraph? Yes, sir. As Ogilvy explains, education helps us to work more productively, invent better technology, and earn more. Surely it must be critical for economic growth. But if you look back through history, there's no evidence that having a high literacy rate made a country industrialized earlier. Between 1600 and 1900, England had only mediocre literacy rate by European standards, yet its economy grew fast, and it was the first country to industrialize. During this period, Germany and Scandinavia had excellent literacy rates, but their economies grew slowly and they industrialized late. Modern cross-country analysis have also struggled to find evidence that education causes economic growth, even though there is plenty of evidence that growth increases education. See added.
So Ogilvy क्या समझाते हैं कि एजुकेशन हेल्प्स अस टू वर्क मोर प्रोडक्टिवली. अगर शिक्षण है तो हम ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, इन्वेंट बेटर टेक्नोलॉजी, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, एंड अर्न मोर, ज्यादा कमाते हैं. श्योरली इट मस्ट बी क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सबसे कंट्री का फायदा होता होगा. बट इफ यू लुक बैक थ्रू हिस्ट्री, अगर हम इतिहास में देखें, देयर इज नो एविडेंस दैट हैविंग अ हाई लिटरेसी रेट मेड अ कंट्री इंडस्ट्रियलाइज अर्लियर. लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई इतिहास में प्रूफ नहीं मिला है कि ज्यादा एजुकेशन की वजह से कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी हुआ. बिटवीन 1600 एंड 1900, ये 300 सालों में, इंग्लैंड हैड ओनली मीडियोकर लिटरेसी रेट्स. यानी इंग्लैंड की जो लिटरेसी रेट थी, यानी जो लोग पढ़ सकते हैं, उनका जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था. ऑडियो डिस्कनेक्ट करो तुम्हारा मतलब. हाँ, had only mediocre literacy rates by European standards. यानी वहां पे देखे तो उनका जो एजुकेशनल रेट था वो बहुत ठीक था. Yet its economy grew fast, लेकिन फिर भी वो कंट्री की इकोनॉमिक बहुत रफ्तार से बढ़ी. And it was the first country to industrialize. यानी कोई एजुकेशन और इन दोनों के बीच में लिंक नहीं थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये पीरियड के बीच में, जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया, ये दोनों कंट्रीज हैड एक्सीलेंट लिटरेसी रेट. और यहाँ के इंग्लैंड के मुकाबले इसका एजुकेशन लेवल ज्यादा था, बट देयर इकोनॉमीज ग्रू स्लोली. लेकिन इनकी तरक्की बहुत धीरे धीरे हुई, एंड दे इंडस्ट्रियलाइज्ड लेट. और फिर भी इनकी तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट से हुआ. सो मॉडर्न क्रॉस कंट्री एनालिसिस, जब हम कंट्री को कंपेयर करते हैं, हैव आल्सो स्ट्रगल्ड to find evidence that education causes economic growth, even though there is plenty of evidence that growth increases education. यानी जितना ग्रोथ होता है उससे एजुकेशन बढ़ता है, लेकिन क्या एजुकेशन से देश का विकास होता है, वो अभी पास्ट में क्लियर नहीं है. Anything that you read that can be matched? B paragraph doesn't talk about it. Right here it talks about the demographic is what? Population. Yeah, that one I सिखवाड़ेलू. The demographic reconstruction of 2 German communities. So that talks about communities, but we have not read anything about communities. दूसरी चीज, which 2 of the following statements does the writer make about literacy rates in section B? Section B paragraph में कौन सी 2 बातें हैं जो राइटर बोलती है? Very little research has been done into the link between high literacy rates and improved literacy. बहुत कम रिसर्च हुई है? नहीं, रिसर्च तो बहुत हुई है. Literacy rates in Germany between 1600 and 1900 were very good. जर्मनी के लिटरेसी रेट बहुत अच्छे थे, ये बोला है उन्होंने. Yes, और बोला है फिर भी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्लो थी. There is a strong evidence that high literacy rates in the modern world result in economic growth. आज के जमाने में ज्यादा लिटरेसी रेट होने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा राइटर ने कहीं बोला नहीं है. वो पुराने जमाने की बात कर रहा है. इंग्लैंड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ हाई लेवल लिटरेसी रेट्स हेल्प द कंट्री इंडस्ट्रियलाइज. इंग्लैंड एक अच्छा एग्जांपल है क्या बताने में कि हाई लिटरेसी रेट्स हेल्प द कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड. इज दैट ट्रू? नो, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्री एजुकेशन का लिटरेसी रेट कम था. इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हेल्प टू इंप्रूव लिटरेसी रेट. यानी अगर देश का ग्रोथ होता है तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लेकिन लिटरेसी रेट बढ़ने से देश की ग्रोथ होगी ऐसा कुछ नहीं. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2 करेक्ट आंसर्स यू हैव टू सिलेक्ट. बी एंड डी करेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay, Manali, please read 3 paragraphs. In the handwritten inventories that Ogilvy is analyzing are the belongings of women and men at marriage, remarriage, and death, from badgerskins to Bibles, sewing machines to scarlet bodices. The villagers' entirely worldly goods are included. Inventories of agriculture equipment and craft tools reveal economic activities. Ownership of books and education-related objects like pens and slates suggest how people learned. In addition, the tax lists included in the database record the value of farms, workshops, assets, and debts. Signatures and people's estimates of their age indicate literacy and numeracy levels.
and court records reveal obstacles such as the activities of the guild that stifle industry. Previous studies usually had just one way of linking education with economic growth, the presence of schools and printing presses, perhaps, or school enrollment, or the ability to sign names. According to Ogilvy, the database provides multiple indicators for the same individuals, making it possible to analyze links between literacy, numeracy, wealth, and industriousness for individual women and men over the long term. In the handwritten inventories that Ogilvy is analyzing, उसको जो मिले थे handwritten inventories 9,000 जितने, तो उसने जो पढ़ा is analyzing are the belongings of women and men at marriage. उनकी डायरी थी मैरिज के टाइम पे, रीमैरिज एंड डेथ. From badger skins to Bibles, badger skins यानी एनिमल की स्किन से लेके बाइबल तक, sewing machines to scarlet bodices. Now what is a bodices? Let me just see. That's a new word. B-O-D-I-C-S. Bodices is a part of dress, यानी कपड़े पहनने की जो चीजें हैं. The village's entire worldly goods are included. वो गांव में जो जो चीजें थी उसका पूरा डिटेल उसके अंदर है. Inventories of agricultural equipment, यानी खेतीबाड़ी के जो साधन थे. Craft tools reveal, craft की जो tools से ये पता चलता है economic activities, कि वो धंधा कैसे करते थे. Ownership of books and education related objects like pens and slates suggest that people learn. ये चीजों से, ये बुक्स और स्लेट से ये भी पता चलता था कि उस जमाने में लोग पढ़ते थे. In addition, the text list, जो text की जो list है included in the database, record the value of farms. फार्म की जो जमीन के जो दाम थे, workshop assets and debts, किसका कितना कर्जा था, किसके पास कितनी मिलकत थी. Signatures and people's estimate of their age indicate literacy. और ये जो सिग्नेचर्स है उससे पता चलता है कि उस जमाने में लोग पढ़े लिखे थे. एंड न्यूमरेसी लेवल्स, उनको गिनती करना आता था. एंड रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड्स रिवील ऑब्स्टेकल्स सच एज द एक्टिविटीज ऑफ द गिल्ड्स दैट स्टिफल्ड द इंडस्ट्री. यानी इंडस्ट्री को ग्रोथ होने में कौन सी चीजें थी जिसको आगे बढ़ाया, अटकाया. प्रीवियस स्टडीज usually just had one way of linking education with economic growth. पहले की स्टडीज में एक ही चीज थी कि वो लिंक करते थे. The presence of schools and printing presses, अगर printing press है, schools है, perhaps of school enrollment or the ability to sign names, यानी तो हम मानते थे कि लोग पढ़े लिखे थे. लेकिन आज की स्टडी में अलग है. So according to Ogilvy, the database provides multiple indicators for the same individuals, यानी कि वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है, making it possible to analyze links between literacy, सिर्फ वो पढ़ लिखता है या फिर वो उसके साथ वो गिनती कर सकता है, या उसके साथ उसके पास पैसा है, and industriousness, and for women and men over the long term. ये सारी चीजें नई रिसर्च में पता चली. अभी can we match one of them here? Which information is matchable to paragraph C? We have done so far 15. So answer is 18. Yes, correct. Examples of items included, यानी कितनी items थी, क्या क्या था, वो सब हमने पढ़ा इसके अंदर. All right, no other questions are related to this. So we read till C. Let's read D paragraphs. Okay, Prachi, read the D paragraphs. Yes, sir. Ogilvy and her team have been building the vast database of material possessions on top of their full demographic reconstruction of the people who lived in these two German communities. We can follow the same people and their descendants across 300 years of educational and economic change, she says. Individual lives have unfolded before their eyes. Stories like that of the 24-year-old Anna Regina and Magdalena Ritter-Mullerin, who were chastised in 1707 for reading books in church instead of listening to the sermon. This tells us they were continuing to develop the reading skills at least a decade after leaving school, explains Ogilvy. The database also reveals the case of Juliana Skewenhurt, a 50-year-old spinster living in the small Black Forest community of Wildberg, who was reprimanded in 1752 by the local
Weavers Guild for weaving cloth and combing wool counter to the guild audience. When Juliana continued taking jobs reserved for male guild members, she was summoned before the guild court and told to pay a fine equivalent to 1/3 of the servant's annual wage. It was a small act of defense by today's standard, but it reflects a time when law in Germany and elsewhere regulated people's access to labor markets. The dominance of guilds not only prevented people from using their skills but also held back even the simplest industrial innovation. तो गिल्ड का हर जगह पे डिस्कशन हुआ है. गिल्ड का क्या मीनिंग है? दे हैड अ सोसाइटी ऑफ पीपल जो अलग अलग कारीगर थे, यानी वही चीज बनाते थे कि ये साधन वगैरह जो है, तलवार बनाना है या कुछ भी फर्नीचर बनाना है, हर चीज के बनाने के पीछे गिल्ड का हाथ था. गिल्ड वाज द कम्युनिटी ऑफ वर्कर्स, और उसके अलावा कोई बाहर का इंसान कुछ बना सकता नहीं था. सो ओजिविल एंड हर टीम, इनकी टीम है, हैव बीन बिल्डिंग द वास्ट डेटाबेस ऑफ मटेरियल पोजेशंस on top of their full demographic reconstruction of the people who lived in these two German communities. ये दोनों जर्मन कम्युनिटीज में जो लोग रहते थे, उसका पूरा पॉपुलेशन रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ they are making a vast database of material possession, कि लोगों के पास कौन सी चीज थी. और उन्होंने ये देखा कि we can follow the same people, यानी वही लोगों, यानी वही फैमिली के लोगों को हम फॉलो करते हैं. In the descendants, उनके जो वंशज है उसको भी हम फॉलो करते हैं across 300 years of education and economic change. कि उन्होंने पढ़ाई की तो उससे उनके लाइफ में 300 साल तक कौन से बदलाव आए वो पूरा हम पढ़ सकते हैं. Because of this record, she says, individual lives have unfolded before their eyes. यानी हर एक इंसान की जो कहानी थी वो उनके सामने ये records के द्वारा आई है. यहाँ पे स्टोरी है, stories like that of 24-year-old Anna Regina and Magdalena Rittmillerin, who were chastised. इन दोनों को डांटा गया था और निकाला गया था चर्च में से in 1707 for reading books in church instead of listening to the sermon. वो प्रवचन सुनने की जगह पे चर्च में बुक्स पढ़ने के लिए उनको डांटा गया और चर्च में से निकाला गया. This tells us they were continuing to develop the reading skills at least a decade after leaving schools. यानी इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग पढ़ना चालू थे, यानी स्कूल छोड़ने के बाद भी. Says Ogilvy. फिर दूसरा, the database also reveals the case of Juliana Schweikert, a 50-year-old spinster. Spinster यानी बहुत बड़ी उम्र वाली कुंवारी स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई, उसको बोलते 50 साल की कुंवारी स्त्री थी, living in a Black Forest community in Wilbur, who was reprimanded. इसको डांटा गया था in 1752 by the local weavers guild. weaver guild यानी जो weaving करते हैं, सिलाई काम करते हैं लोग, उन्होंने उसको डांटा था for weaving cloth and combing wool. वो अपने हिसाब से वो कपड़ा ही सिलाई करना चालू कर दिया, तो उसको डांटा था. क्यों? Because it was counter, यानी it was opposite to the guild ordinance. यानी वो गवर्नमेंट, यानी वो लोगों के खिलाफ वो जाके खुद का कर रही थी. When Juliana continued taking jobs, वो अलग अलग काम जिसको ऑर्डर मिलते थे वो ऑर्डर लेना चालू कंटिन्यू रखा. रिजर्व फॉर मेल गिल्ड मेंबर्स, जो पुरुषों के काम थे वो उसने लिए, तो उसको कोर्ट में बुलाया गया. She was summoned before the guild court and told to pay a fine equivalent to 1/3 of a servant's annual wage. यानी साल की जो तनख्वाह होती है इसकी 1/3 पेनल्टी उसको भराई. It was a small act of defiance by today's standard. आज के हिसाब से हम देखें तो बहुत छोटा सा अपराध था, but it reflects a time when laws in Germany, लेकिन उस जमाने में जो जर्मनी के जो नियम थे and elsewhere regulated people's access to labor markets, कि लोगों के कितने अधिकार थे उस समय में, वो बताता है. The dominance of guilds not only prevented people from using their skills. Dominance यानी गिल्ड, यानी ये जो संस्थाएं थी जो काम करते थे उनका ही राज था कि उन्हीं के पास से आपको काम लेना है, और वो दूसरे लोगों को काम नहीं करने देते, बट ऑल्सो हेल्ड बैक इवन द सिंपलेस्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन. और इसी की वजह से वो लोग आगे तरक्की, इंडस्ट्रियल इनोवेशन को अटका के रखा था उन्होंने. Anything that you read here? This was D para. Sixteen. 16 act of defiance, वो लेडी ने काम चालू रखा. So that was an account of one individual's refusal to obey an order. उसने ऑर्डर नहीं सुना. यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन है,
demographic reconstruction of 2 German communities. The database that Ogilvy and her team has compiled sheds light on the lives of the range of individuals as well as those of their dash. यानी वो individuals की life पे भी और उनके वंशज पे भी उन्होंने ध्यान डाला है over a 300-year period. वंशज के लिए कौन सा word use किया गया? Come on, look and tell me. We can follow the same people and their descendants. Descendants यानी उनके वंशज के लोग, यानी वही पीढ़ी के आगे के लोग. So the answer for 19th is descendants, यानी वंशज. पूर्वज के लिए उसका opposite. What is the meaning of, what is the word for that? Ancestors. हमारे पूर्वज है तो वो हमारे ancestors हो गए. वो ancestors के वंशज हम हुए तो we are their descendants. Ancestors and descendants. Over a 300-year period. For example, Anna Regina and Magdalia Rithmalerin were reprimanded. इनको डांटा गया था for reading while they should have been paying attention to a dash. वो प्रवचन नहीं सुन रहे थे. प्रवचन के लिए कौन सा वर्ड था? Sermon. वो लोग sermon नहीं सुन रहे थे. Don't confuse sermon with Salmon Boy. Here, instead of listening to a પ્રવચન જે હતું એ ચર્ચમાં સાંભળવાની જગ્યાએ છોકરીઓ બુક વાંચતી હતી. તે લોકોને એ લોકો કકડાવી. There was also Juliana Schweckert, who came to the notice of the Weavers Guild, wo unki nazron mein aayi in the year 1752 for breaking guild rules. As a punishment, she was later given a dash. क्या दिया गया उसको? Fine. Was given a fine. दंडित कराया गया. Cases like this illustrate. ये cases से हमें पता चलता है कि how the guilds could prevent dash. Guilds कौन सी चीज को अटकाते थे and stop skilled people from working. उन्होंने कौन सी चीज को अटका के रखा था because वो काम किसी और को देना नहीं चाहते. The dominance of the guild not only prevented people from using their skills but also held back even the simplest industrial innovation. Cases like this illustrate how the guilds could prevent dash and stop skilled people from working. Innovation. સમજણ પડે છે બધાને કેવી રીતે આન્સર્સ મળ્યા આપણને? Yes, sir. All right, we read D, let's read E. Dinal, can you read E paragraph? Yes, sir. The data gathering phase of the project has been completed, and now, according to Ogilvy, it is a time to ask the big questions. One way to look at whether education causes economic growth is to hold wealth constant. This involves following the lives of different people with the same level of wealth over a period of time. If wealth is constant, it is possible to discover whether education was, for example, linked to the cultivation of new crops or to the adoption of industrial innovations like sewing machines. The team will also ask what aspect of education helped people engage more with productive and innovative activities. Was it, for instance, literacy, numeracy, book ownership, years of schooling? Was there a threshold level, a tipping point that needed to be reached to affect economic performance? The data gathering phase of the project, यानी ये जो डेटा इकट्ठा करने का जो फेज है, लेवल है, has been completed. यानी पूरा डेटा इकट्ठा हो गया है. Now, according to Ogilvy, it is time to ask the big questions. और अब जो important सवाल है वो हम पूछेंगे. One way to look at whether education causes economic growth is to hold wealth constant. Is to hold wealth constant. यानी wealth को हम calculate करेंगे कि क्या education से economic growth होती है. This involves following the lives of different people. अलग-अलग लोगों की जिंदगी को study करेंगे with the same level of wealth over a period of time. कि उनके पास कितना धन पहले था और आगे जाके धन बढ़ाया है. If wealth is constant, अगर वो पैसा उनके पास रहा है, it's possible to discover whether education was, for example, linked to the cultivation of new crops. क्या उनका education जो है खेती-बाड़ी से related था, or to the adoption of industrial innovation like sewing machines. क्या फिर और तकनीक और मशीन से जुड़ा हुआ था. तो क्या उससे उनका पैसा बढ़ा, धन बना. The team will also ask
what aspect of education help people engage more with productive and innovative activities. ये दूसरा सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या एजुकेशन की वजह से लोग दूसरे बड़े प्रोडक्ट्स में इनोवेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए? Was it for instance literacy, numeracy, book ownership, years of schooling? क्या ये सब factors थे? Was there a threshold level? या एक threshold level था, tipping point that needed to be reached to affect economic performance? कि economic performance को बढ़ाने के लिए एक tipping point के इतना करना पड़े. तो ये सारे सवाल जो है वो हम पूछेंगे अब. E, come on. Anything that you 17. 17 is a reference to a region. There's no region discussed here. कोई एक specific region की बात नहीं की. 14. 14, correct. An explanation of the need for research. Research की जरूरत पड़ेगी to focus on individuals with a fairly consistent income. यानी हम वो individuals को follow करेंगे जिनकी income individually constant रही है, और उस constant income और constant wealth से हम decide करेंगे कि वो education का कितना बड़ा role था. Alright, last para. Ogilvy hopes to start finding answers for these questions over the next few years. और इन सवालों के जवाब अगले कुछ सालों में ओजिल्वी को मिलेंगे. One thing is already clear. एक बात तो स्पष्ट है. She says the relationship between education and economic growth is far from straightforward. इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो सीधा नहीं है. It is not straightforward. German speaking Central Europe, जो यूरोप का हिस्सा था जो जर्मन बोलता था, is an excellent laboratory for testing theories of economic growth. Economic growth को टेस्ट करने के लिए ये हिस्सा जो है, this is the specific region जिसकी बात की है. She explains between 1600 and 1900 literacy rates and book ownership were high. उस जमाने में पढ़ने का लेवल और बुक्स होने का लेवल बहुत ऊंचा था. And yet the region remained poor. फिर भी लोग गरीब थे. It was also the case that local guilds and merchant associations were extremely powerful. उस जमाने के जो merchants थे और जो local guild वो बहुत powerful थे and legislated against anything, और वो ऐसे नियम बनाते थे जो उनकी monopoly का तोड़े ना. Anything that undermined their monopolies. In villages और गांव में throughout the region, guilds blocked labor migration. वो labor का migration अटकाते थे, resisted changes that might reduce their influence. और कोई भी ऐसा बदलाव है जो उनकी ताकत को कम कर दे, ऐसे बदलाव को वो अटका देते. So early findings, जो पहले की जो findings है, suggest that the potential benefit of education for the economy can be held back by other barriers. यानी कि जो education का जो benefit होना चाहिए economy पे, वो दूसरे अलग-अलग कारण की वजह से अटक जाता है by other barriers. Other barriers यानी कौन से? ये guild की जो बात की हमने, guild वाले लोग, उनकी दादागिरी की वजह से education का कोई फायदा ही नहीं हुआ. And this has implications for today. और उससे आज तक असर होता है. Says Ogilvy, huge amounts are spent improving education in developing countries. लोग आज भी poor countries में बहुत पैसा government खर्च करती है. But this spending can fail to deliver economic growth if restrictions block people. आज के ज़माने अगर हम लोगों को कुछ ना कुछ restrictions से अटका दे, तो education का कोई मतलब नहीं है. Especially women and the poor. लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि women को ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो education का फायदा नहीं होता है. And the poor, from using their education in economically productive ways, क्योंकि वो अपनी शिक्षा को फिर सही तरीके से use नहीं कर सकते हैं. If economic institutions are poorly set up, अगर हम ये नियमों को बहुत ठीक से नहीं set up करेंगे, for instance, education can't lead to growth, तो उससे कोई विकास होगा, शिक्षण से कोई विकास होगा नहीं. So that was F here, reference to a region. Region कौन सा है? German spoken part of England, being particularly suited to research into the link between education and economic. This is that. All done, right? 14 to 18. Then 19 to 22, all done. And last part here. Question 25 and 26. Which two of the following statement does the writer make in section F about guilds in German-speaking Central Europe between 1600 and 1900? They help young people to learn a skill. लोगों को skill सीखने में मदद करते थे, ऐसा कुछ दिया गया है? No. They were opposed to people moving to an area of work. वो दूसरे लोगों को कोई एरिया में इधर से उधर जाने नहीं देते थे. वो लेबर माइग्रेशन लगा के रखते थे कि यहाँ का कारीगर यही काम करेगा. यहाँ पे लिखा है
Look at what was it? Here, in villages throughout the regions, guild blocked labor migration. Labor migration को उन्होंने block किया था, right? So your first answer is here. They were opposed to people moving to an area for work. काम के खोज में अगर कोई दूसरी जगह चला जाए नहीं चलेगा. वो इंसान को वहीं पे काम करना है. So one is B. They kept better records than guilds in other parts of the world. दुनिया के दूसरे parts के comparison में इनका record keeping ज़्यादा अच्छा था. No discussion about it. They opposed practices that threatened their control over a trade. अगर उनको कोई भी चीज से खतरा लगता था तो वैसी प्रैक्टिस उसका वो विरोध करते थे. They predominantly consistent of wealthy merchants. उसके अंदर वो गिल्ड के अंदर सिर्फ wealthy merchants ही थे. D. Answer D. They oppose practices that threaten their control over a trade. So your answers are B and not sorry. Yeah, B and D correct. B and D are your correct answers. All clear now? All right, so this is the third passage. Timur Gereve, blindfold chess champion. So we have the last passage here, reading passage 3. Timur Gereve, blindfold chess champion. What is blindfold? जे आंखों पर पट्टी बांध. हेडफोन्स बेटा काढ़ी नाखो નથી જરૂર અને ઓડિયો ડિસ્કનેક્ટ કરી. All right, so we are talking about this guy here. Let's read the first passage. All right, so start. Manali, can you read a paragraph? Yes, sir. Next month, a chess player named Timur Gereve will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, Gereve himself will be blindfolded. Even by world record standards, it sets a high bar for human performance. The 28-year-old already stands out in the rarefield world of blindfold chess. He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles, and he gets his kicks from the adventure sports of base jumping. He has already proved himself a strong chess player too. In a 10-hour chess marathon in 2013, Gereve played 33 games in his head simultaneously. He won 21, 29 and lost none. The skill has become his brand. He calls himself the blindfold king. So this looks like a news article. Next month, a chess player named Timur Gereve will take on nearly 50 opponents. यानी वो 50 अलग-अलग लोगों के सामने एक साथ chess खेलेगा. But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, वो normally खेलेंगे. Gereve himself will be blindfolded. वो अपने आंखों पे पट्टी बांध के खेलेगा. Even by world record standards, it sets a high bar for human performance. यानी बहुत बड़ा बहुत मुश्किल काम है. The 28-year-old already stands out in the rarefied world of blindfold chess. Rarefied यानी ऐसी दुनिया जिसमें blindfold chess खेला जाता है, वो बहुत rare है, उसमें वो खेलने वाला. He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles. So अजीबोगरीब बाल रखता है, and he gets his kicks from the adventure sport of base jumping. उसको base jumping पसंद है. He has already proved himself a strong chess player. उसने खुद को साबित भी कर दिया है too. In a 10-hour chess marathon in 2013 में जो chess marathon थी, Gereve played 33 games in his head simultaneously. एक साथ 33 games खेल रहा था. He won 29 and lost none. एक भी game हारा नहीं. The skill has become his brand. He calls himself the blindfold king. वो खुद को क्या बुलाता है? The blindfold king. So that is the introduction to this guy Gereve. Now questions 27 to 32. You may use any letter more than once. यानी किस paragraph में हमें ये particular information दिखने को मिल रही है. 27. A reference to earlier examples of blindfold chess. पुराने जमाने में blindfold chess कैसे खेला करते थे उसकी बात की गई है. अभी तक नहीं पढ़ा. An outline of what blindfold chess involves.
ब्लाइंडफोल्ड चेस को कैसे खेला जाता है उसके बारे में डिटेल्स क्या हमने ऐसा पढ़ा है? नो. A claim that Garev's skill is limited to chess. एक ऐसा दावा जो बताता है कि गैरेव को सिर्फ चेस खेलना ही आता है और कुछ नहीं कर सकता वो, ऐसा कुछ दिया गया नहीं है. Why Garev's skill is of interest to scientists. इस बंदे की जो कला है वो साइंटिस्ट के इंटरेस्ट में क्यों है, क्यों साइंटिस्ट को इसमें दिलचस्पी है? An outline of Garev's priority. Garev's की प्रायोरिटी क्या है, उसकी आउटलाइन. अभी तक उसकी प्रायोरिटी हमने देखी नहीं. A reason why the last part of the game may be difficult. एक ऐसा कारण जिसकी वजह से गेम का जो आखिरी हिस्सा होता है वो कैसे मुश्किल हो सकता है. Are we clear? 27 to 32. Is there anything that we read that we can match? No. Oh. Not exactly. Nothing that is relatable. Right? Okay. And let's read the true, false, and not given. In the forthcoming games, आने वाले games, all the players will be blindfolded. जितने भी participants रहेंगे वो सबके ऊपर आंखों पे पट्टी होगी. True, false, or not given? Not given. How is it not given? It is a false. False कैसे? Because एक बंदा है वो खुद की आंखों पे पट्टी लगाएगा, लेकिन उसके सामने 50 players के ऊपर पट्टी नहीं रहेगी. So all participants will not be blindfolded. यहाँ first, second line में लखेलो छे. 50 opponents, his players will play normal, but he himself will be blindfolded. क्या not given है वो अत्यारे? Garev has won competitions in base jumping. वो base jumping में भी competition जीता है. सिर्फ base jumping का उसको शौक है. क्या उसने कोई चीज जीती है? Not given. UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players. UCLA ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने चेस प्लेयर्स के ऊपर रिसर्च की है. अभी तक हमने UCLA के बारे में पढ़ा ही नहीं है. Good chess players are likely to be able to play blindfold chess. जो भी अच्छा blindfold chess player होता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे से चेस अपनी आंखों पे पट्टी बांध के खेल सकता है. All right, so first one we did not use it for the match the headings, but we used it for true, false, and not. All right, so let's start with the second one. Beenal, please read B paragraph. But Garev's prowess has drawn interest from beyond the chess playing community. In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles called him in for tests. They now have their first results. The ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished players, said Jesse Risman, who runs a memory lab at UCLA. But the thing that's so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once. To me, it is simply astonishing. Garev's prowess यानी किसी का जो हुनर है, टैलेंट है, that is called prowess, has drawn interest from beyond the chess playing community. यानी chess community जो chess के fans है, उससे बाहर के लोगों को भी interest आ गया. In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats. ये समझने के लिए कि ऐसे लोग कैसे अंधा बन के चेस खेलते हैं, researchers in the University of California in Los Angeles, UCLA, called him in for a test. उसको एक test experiments के लिए बुलाया. They now have their first results. The ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished players. अच्छे players जो होते हैं, वो अगर उनके आंखों को बंद करके चेस खेले तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है. This Jesse Risman, उसका कहना है, who runs a memory lab at UCLA. यानी कि कोई भी अच्छा प्लेयर है, the ability to play chess with your eyes closed, वो डिफिकल्ट नहीं है. क्यों नहीं है? But the thing that's so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once. एक समय पे एक साथ वो कितनी गेम्स खेल सकते हैं, वो जरूरी है. To me, it is simply astonishing. मुझे ये देख के आश्चर्य होता है. So now again, do we have any answer for this? Look at questions 27 to 32.
Anyone? Sorry. 30. Why Garev's skill is of interest to scientists? Scientists को interest क्यों है? वो कहाँ पे लिखा था? यहाँ पे लिखा है क्यों इंटरेस्ट में है? Because a few individual is the number of games कि वो एक साथ वो इतनी सारी games कैसे खेलते हैं, right? So like him can perform such mental feats in hope of understanding. वो कैसे करता है? उन्होंने ये किया है because वो multiple games एक साथ खेल सकता है. Is that the answer? 30? Yes. So 30 का answer is B. Also, now do we have answer for UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players? The answer is not given. उन्होंने रिसर्च किया है, यही बताइए ये पहले है या उनसे पहले कोई कर चुका है? We don't know that. All right, let's read C paragraph. Prachi, can you read C paragraph? Yes, sir. Garave learned to play chess in his native Uzbekistan when he was 6 years old. Tutored by his grandfather, he entered his first tournament aged 8 and soon became obsessed with competitions. At 16, he was crowned Asia's youngest ever chess grandmaster. He moved to the US soon after and, as a student, helped his university win its first national chess championship. In 2013, Garave was ranked the third best chess player in the US. So Garave learned to play chess in his native Uzbekistan when he was 6 years old. 6 साल का था तब उसने सीखा. Tutored by his grandfather, उसके दादा ने उसको सिखाया. He entered his first tournament. 8 साल की उम्र में वो टूर्नामेंट में आया. Soon became obsessed with competition. उसको मजा आ गई. 16 साल की उम्र में he was crowned Asia's youngest ever chess grandmaster. और फिर वो US चला गया. He moved to US soon after and as a student helped his university win its first, यानी वो अपनी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन के यूनिवर्सिटी का फर्स्ट नेशनल चेस चैंपियनशिप जिताया. 2013 में Garave was ranked the third best chess player in the US. इसके बारे में हुआ. Anything that you can match here? So we have done only one. Why it is of interest to the scientist? Is there anything that we can say for C? Not yet. Acha, over here, we have done all of them. Now tell me, in the forthcoming games, this one is false. This one is not given. This one is also कि वो first university. A good chess players are likely to be able to play blindfold chess. Yes, the answer is true. All right, we didn't get anything from C. Let's read D para. Kunal, can you read D paragraph? Kunal, are you there? Okay. So Kunal is not there. All right. Ria, can you read D paragraph? Yes, sir. To the uninitiated, blindfold chess seems to call for superhuman skill, but displays of the feat go back centuries. The first recorded game in Europe was played in 13th century Florence. In 1947, the Argentina Grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind, winning 39 in the 24-hour session. The uninitiated यानी जो इस फील्ड में नहीं है, जिसको इस बंदे को नॉलेज नहीं, उसको blindfold chess यानी आंखों पे पट्टी बांध के चेस खेलना seems to call for superhuman skill कि भाई ये तो एक सुपर पावर के बराबर हो गया. But displays of the feat go back centuries. यानी कई सदियों पहले भी ये चीज हो चुकी है. The first recorded game in Europe was played in 13th century Florence में खेला गया था.
ये गेम ऐसा खेला गया था 1947 में अर्जेंटीनियन ग्रैंड मास्टर मिगेल नाचडॉफ प्लेड 45 साइमल्टेनियस गेम्स इन हिज माइंड, एक साथ 45 गेम्स खेल रहा था, मीनिंग 39 इन 24 आवर सेशन, यानी एक साथ इतने सारे चेस बोर्ड्स होते हैं, हर चेस बोर्ड पे ये गेम खेला जाता है और वो मेंटली हर एक गेम के बारे में एक मूव स्टेप डिसाइड करता है। सिलेक्ट द आंसर, रीडिंग पैसेज। Anyone? 27 is the 27. correct answer. Yes. A reference to earlier examples of blindfold chess. Reference to earlier examples. कौन से examples मिले हमें? We got it to फ्लोरेंस में खेला गया, अर्जेंटीनियन ग्रैंड मास्टर ने खेला है, तो ये पास्ट में हुआ है। Just E paragraph. Go ahead. Accomplished players can develop the skill of playing blind even without realizing it. The nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out. From this, regular players develop a memory of the patterns the pieces make, the defenses and attacks. You recreate in your mind, said Gareyev. A lot of players are capable of doing that I am doing. The real mental challenge comes from playing multiple games at once in the head. Not only must the positions of each piece on every board be memorized, they must be recalled. Faithfully when needed, updated with each player's moves, and then reliably stored again so the brain can move on to the next board. First moves can be tough to remember because they are fairly uninteresting, but the ends of the games are taxing too. As exhaustion sets in, when Garraway is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the piece's positions. Accomplished players यानी जो घड़े हुए players है can develop the skill of playing blind even without realizing. वो उनको पता भी नहीं होता है कि वो लोग blind खेल सकते हैं. The nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out. जब हम गेम खेलते हैं तब हमें mentally सोचना पड़ता है कि अगर मेरा ये next step रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, तो वो imagination में ही होता है. From this, regular players develop a memory for the patterns the pieces make and the defenses and attacks. कौन सा हमला करना है, बचाव करना है, वो मेंटली उनको फिगर आउट करना ही पड़ता है. तो ऐसे कोई भी प्लेयर होता है वो माइंड में क्रिएट करता है. यू रिक्रिएट इट इन योर माइंड, सेड गैरेव. A lot of players are capable of doing what I'm doing. The real mental challenge, सबसे दुविधा वाली बात ये है, comes from playing multiple games at once in the head. मुश्किल चीज ये है कि इतनी सारी गेम्स कैसे मेरे ब्रेन में खेलनी है. Not only must the positions of each pieces on every board be memorized, यानी इतने सारे बोर्ड्स पे अलग अलग जगह पे जो प्यादे हैं उनकी पोजीशंस को हमें याद भी रखना है. They must be recalled faithfully when needed. उनको याद भी आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे सिपाही है. Updated with each player's moves and then reliably stored again. और जैसे जैसे गेम बढ़ती है तो हर बार चेंज होता है पोजीशन, तो वो भी याद रखना पड़ता है. So the brain can move on to the next board. First moves can be tough to remember because they are fairly uninteresting. जो स्टार्टिंग का मूव होता है वो डिफिकल्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है. बट द एंड्स ऑफ गेम्स आर टैक्सिंग. लेकिन मुश्किल पार्ट होता है लास्ट में, टू, एज एग्जॉशन सेट्स इन, क्योंकि आपका ब्रेन थक जाता है. व्हेन गैरेव इज टायर्ड, जब वो थक जाता है, हिज रिकॉल कैन गेट पैची. पैची मींस धुंधला धुंधला, उसको याद नहीं रहता. ही समटाइम्स मेक्स मूव्स बेस्ड ऑन only a fragmented memory of the pieces position. यानी थोड़ा थोड़ा बहुत याद रहता है, उसी के बेसिस पे वो एक मूव करता है. All right, anything? 32. A reason why the last part, yes, a last part of a game may be difficult. Why can it be difficult? Because it is difficult to remember, because it gets fragmented. इतना clear हमें याद नहीं रहता है. कोई और? One more. 28 also. An outline of what blindfold chess involves. Blindfold chess कैसे खेला जाता है वो भी हमने पढ़ा कि आपको हर मूव्स को याद रखना है. You know, those are the things. So this one is E, this one is E,
Then which one was B? 30. And then we also did D. Okay. Okay. यहाँ पे हमारे पास लास्ट पार्ट है हाउ द रिसर्च वाज कैरिड आउट. तो रिसर्चर्स ने रिसर्च कैसे कैरी आउट की, यानी ये जो यूसीएलए में उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट की. The researchers started by testing Galeo's desk. Galeo की कौन सी चीज को टेस्ट किया? For example, he was required to recall a string of dash. String यानी series of. उसको पूछा गया उनको कौन सी चीजें याद रखनी थी. He was required to recall यानी उसको याद करके बताना था. A string of dash in order यानी एक सीरीज में उसको एक चीज को बोलना था याद करके. And also in reverse, और वही चीज को रिवर्स भी बोलना था, रिवर्स ऑर्डर. Although his performance was normal, जो performance था वो normal था, लेकिन scan showed an unusual amount of dash. Scan के अंदर एक unusual amount of dash दिखाई दिया within the areas of Gareyev's brain that are concerned with directing attention, जो ध्यान खींचने के related है. तो कौन सी चीज दिखाई दी? In addition, the scans raised the possibility of unusual strength in the parts of his brain that deal with dash input. उसके साथ साथ the scans जो थे raised the possibility of unusual strength. उसके दिमाग में unusual अजीब प्रकार की एक ताकत थी of the brain that deal with dash input. What kind of input? So we read till E. Let's read F para. Penal, please read F paragraph. The scientists first had Gareyev perform some standard memory tests. This assessed his ability to hold numbers, pictures, and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat both forwards and backwards soon after hearing them. Most people manage about 7. He was not exceptional on any of these standard tests, says Risman. We didn't find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at. But next came the brain scans. With Gareyev lying down in the machine, Risman looked at how well connected the various regions of chess players' brain were. Though the results are tentative and yes, as yet unpublished, the scans found much greater than average communication between parts of Gareyev's brain that make up what is called frontoparietal control network. Of 63 people scanned alongside the chess player, only 1 or 2 scored more highly on the measure. You use this network in almost any complex task. It helps you to allocate attention, keep rules in mind, and work out whether you should be responding or not, said Risman. The scientists had Gareyev's perform some standard memory test. सबसे पहले उन्होंने क्या conduct किया उसकी memory test. These assessed his ability to hold numbers, pictures and words in mind. वो कितने pictures, कितने numbers या words को याद रख सकता है उन्होंने टेस्ट किया. तो क्या टेस्ट किया सबसे पहले उनका standard memory test. Taking you back to the fill in the blanks question. The researchers started by testing Gareyev's dash. They're starting out his memory, right? One classic test, एक जो classic test थी, test measures how many numbers a person can repeat. वो कितने numbers repeat कर सकता है, both forwards and backwards soon after hearing them. यानी अलग-अलग आंकड़ों को बोला जाता है. And most people manage about 7. He was required to recall a series of dash in order and also in reverse order. Numbers. Of numbers, correct. Answer is numbers. Risman said he was not exceptional on any of these standard tests. यानी कोई भी टेस्ट में वो exceptional नहीं था, यानी वो अपवाद स्वरूप नहीं था, यानी वो नॉर्मल ही था, जितने नॉर्मल लोग करते वही था. We didn't find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted. हमें और चेस के खेलने के अलावा और कोई स्पेशल चीज नहीं दिखाई.
But next came the brain scans. और जब हमने brain को scan किया with Garev lying down in the machine, Drisman looked at how well connected the various regions of the chess player's brain were. उसके brain कितना अलग-अलग area से connected था. Though the results were tentative, यानी not completely sure and yet unpublished, the scan found, scan को क्या मिला? Much greater than average. Average से ज़्यादा communication between parts of Garev's brain that make up what is called the frontoparietal control network. क्या मिला उनको? सबसे ज़्यादा लेवल का greater than average communication. उसके brain के अंदर का communication level बहुत high था. Out of 63 people scanned alongside the chess player, उसके साथ जितने 63 players को scan किया, only 1 or 2 scored more highly on the measure. You use this network in almost any complex task. It helps you to allocate attention. Keep rules in mind and work out whether you should be responding or not. All right, so here answer question number 39. So although his performance was normal, scans showed an unusual amount of dash within the areas of Garev's brain that are concerned with directing attention. Communication. Correct. The answer is communication. Are we clear, everyone? Okay. और एक और आंसर मिला हमें. This was F paragraph में. चलो आवाज़ कोई में F सावे तो. 29. Yes, correct. 29 is F. A claim that his skill is limited to chess. कि chess के अलावा और कोई हुनर नहीं है. He is good at only at chess. All right, let's read G and H. Priyanka, can you read G paragraph? Yes, sir. It was not the only hint of something special in Garev's brain. The scans also suggest that Garev's vision network is more highly connected to other brain parts than usual. Initial results suggest that the area of his brain that progress visual images such as chessboards may have stronger links to other brain regions and also be and so be more powerful than normal. While the analysis are not finalized yet, they may hold the first clue as Garev's extraordinary abilities. It was not the only hint of something special in Garev's brain. सिर्फ यही एक special चीज नहीं थी. The scan also suggests that Garev's visual network is more highly connected. उसका जो brain का जो visual network है, वो बहुत ज़्यादा connected है to other parts of brain parts than usual. Normal से ज़्यादा visual network बहुत strong है. Initial results suggest, अभी के जो result है वो ये बताते हैं that the areas of his brain that process visual images, जो visual image process करने वाला जो brain है, such as chessboards may have stronger links to other brain regions. Brain के दूसरे हिस्सों से बहुत strongly connected है, and so be more powerful than normal. While the analysis are not finalized yet, अभी हम कुछ कह नहीं सकते. They may hold the first clues to Garev's extraordinary ability. तो उसको समझने में हमें first clue यहीं से मिलेगा. Last question here, 40. In addition, the scan raised the possibility of unusual strength in parts of the brain that deal with dash input. What kind of input? That's your answer. Visual input. So we have only one question that is to be solved, and that what is it? Question number 31. An outline of Garev's priority. अभी तक उसकी priority क्या है? वो हमने अभी तक solve. All right, so let's read the last one. Prachi, can you read H? Yes, sir. For the world record attempt, Garev hopes
to play 47 blindfold games at once in about 16 hours. He will need to win 80% to claim the title. I don't worry too much about the winning percentage. That's never been an issue for me, he said. The most important part of blindfold chess for me is that I have to find the one thing that I can fully dedicate myself to. I miss having an obsession. So here are the future plans for the world record attempt. Garev hopes to, यानी वो आशा करता है, so that is his future plan. कि 47 blindfold games at once in 16 hours में वो इतनी game खेलेगा. He will need to win 80% to claim the title. I don't worry too much about the winning percentage. मुझे जीतने की इतनी पड़ी नहीं है. That's never been an issue for me, he said. The most important part of blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to. I miss having an obsession. मेरा पागलपंती जो था वो अभी कम हो गया because मैं यही करता हूँ. So that is it. That's clear. It's an outline of Garev's priority. 31. All clear? Yes, sir.